gracing the occasion, we have our esteemed chief guest with us, Shri Kailash Gehlotji, Honorable Minister, Ministry of Transport, Women and Children Development, Information and Technology and Home, Government of NCT of Delhi. A very warm welcome to you, sir. And along with him, we have a distinguished lineup of guests, including Mr. K.S. Jayachandranji, IFS, Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee, Government of NCT of Delhi. With him, we have Mr. Rajesh Kumar, IRS, Additional Commissioner of GST and Customs, Directorate of International Customs. Mr. Sanjay Saxena is our next guest, who is the Chief General Manager, DTC Transport, Delhi, Department of Delhi. With him, we have Mr. Manish Raj Singhania, President, FADA, Mr. C.S. Vigneshwar, Vice President, FADA, Mr. Sai Girdharji, Secretary, FADA, Mr. Vinkesh Gulati, Chairman, FADA Academy and Research, Ms. Garima Mishra, Chairperson, FADA Delhi and Chairperson, WIF, and last but not the least, Mr. Saharsh Damani, CEO, FADA. A very warm welcome to all the dignitaries. We are very glad that you are here to make this event more remarkable. Thank you so much, sir. So as we begin, today's event, which is the 16th edition and second edition of Vyapar Delhi. The theme of this event is driving success together. So I would request each one of you to join us as we navigate the dynamic landscape of the automotive industry, focusing on challenges and opportunities, sustainability strategies, and preparedness for disruptive technological advancements and new fuel paradigms. But before we begin, I request everyone to all rise for the national anthem. Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttara Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gadha Jana Gana Mangala Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. On that note, let's give a head start to the program, and I would request the following dignitaries to please step forward for the lighting of the lamp. So may I please invite our esteemed chief guest, Shri Kailash Gehlotji, who's the Honorable Minister, Ministry of Transport, Women and Child Development, Information and Technology and Home, Government of NCT of Delhi. With him, I would also request Mr. Manish Raj Singhania, President, FADA, Mr. C.S. Vigneshwar, Vice President, FADA, Mr. Sai Girdharji, Secretary, FADA, Mr. Vinkesh Gulati, Chairman, Academy and Research, FADA, and Mr. Saharsh Damani, CEO, FADA. Joining with them, we have Ms. Garima Mishra, Chairperson, FADA Delhi, and Chairperson, WIF, for the lamp lighting ceremony. Shubham Gurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasampada. Illuminating the lamp symbolizes the unity of knowledge and positivity. Goddess of knowledge, Ma Saraswati's blessings be upon us today. Now, with the lamp glowing in the background, I would request our chief guest, Shri Kailash Gehlotji, Honorable Minister, Mr. Manish Raj Singhania, President, FADA, and Ms. Garima Mishra, Chairperson, FADA Delhi, and Chairperson, WIF, to step forward on the dais and be seated.
with this, I would request Ms. Garima Mishra to welcome Shri Kailash Gehlotji with our Sustainable Welcome Initiative, where there is a slight bit of twist. Instead of the traditional bouquet, we present a certificate symbolizing the planting of a separate groove of 11 samplings, each on his behalf through our partner, Give Me Trees Trust. Moving towards a greener future, our commitment to sustainability remains unwavering. Thank you so much, Ms. Garima Mishra, and thank you so much, Shri Kailash Gehlotji, for gracing this occasion. Now, we move forward for the welcome address. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to introduce our esteemed speaker for the welcome address, Ms. Garima Mishra. With over 20 years in the automotive retail industry, she has left an indelible mark, working with renowned brands like Jeep, Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda, and Ashok Leyland. Ms. Mishra, a true entertainment enthusiast, not only owns an advertising company, but is also a partner in a leading Indian international entertainment portal. My mistake. As the managing director of Group Landmark, overseeing 60+ state-of-the-art facilities, she leads a team of 6,000+ with the industry's lowest attrition rate. Additionally, as the promoter and managing director of Wild Dreams Media and Communication, she has spearheaded impactful campaigns, including the online election campaign for Shri Narendra Modi ji. A distinguished alumna of Force School of Management, Delhi, and Shri Ram College of Commerce, Ms. Garima Mishra is definitely a force of reckon with the realms of business strategy and marketing. So let's welcome her with a huge round of applause, Ms. Garima Mishra. A very good afternoon to all the distinguished guests and fellow dealers. I would like to extend a very, very warm welcome to our chief guest, Shri Honorable Minister of Transport, Shri Kailash Gehlotji. I would also like to welcome all our dignitaries from the various government bodies, Shri Jayachandran ji from DPCC, Shri Rajesh Kumar ji from GST, and Shri Sanjay Saxena ji from the Transport Department. I would also like to welcome all the dignitaries from the automobile industry, along with the EC members of FADA. I'm extremely grateful to all of you for sparing your valuable time to grace this occasion. We are having Delhi Vyapar after 7 years, and this has been possible only because of the encouragement and support from the Delhi regional directors, the EC members, and the FADA Secretariat. The state of Delhi, a significant automotive hub, accounts for approximately 6.5 lakh vehicles annually, contributing around 2.7% to the sector. The city hosts around 550 dealership outlets, providing employment to approximately 60,000 individuals. Our collective efforts have significantly contributed to the state exchequer, generating around 3,000 crores through motor vehicle tax and around 11,000 crores through GST contributions. Despite the expanse in contributions of the dealership business faces many challenges here. Today, we shall discuss how can we create ease of doing business in Delhi. We shall also discuss the various business opportunities that can help us enhance our business. I sincerely hope that today's event has many key takeaways for all of you, and this becomes a stepping stone in strengthening the dealership business in the state of Delhi. Thank you, and wishing you a very pleasurable evening ahead. Thank you so much, Ms. Garima Mishra. It was definitely insightful. Now, I invite Mr. Manish Raj Singh Ghania to deliver the presidential address. Now, as the president of FADA and managing partner of Rallis Motors, a Mahindra & Mahindra dealership, he brings a wealth of experience, leading the Raipur Automobile Dealers Association for the past 9 years.
Mr. Singhania is not only a seasoned professional in the automotive industry, but also engages in real estate and agriculture. With BCom and MBA degrees, he has served FADA in various roles for 12 years. Recognized as the Automobile Person of the Year in the Chhattisgarh Leadership Award 2014, his dealership Rallis Motors received the Emerging Chhattisgarh Awards 2013 for its green initiatives. Mr. Singhania's commitment to the environment also includes distributing 22,000 mango saplings with every new vehicle delivered in the last 12 years. So let's hear from him now. Warm good afternoon, friends. First of all, a warm welcome to Mr. Gehlot here. He is here with us second time, and he is always a very warm person, very smiling person. Normally, last time when he was here in one of our conclaves, he kind of, whatever we required, he delivered everything on the stage only. And I am proud to share that Delhi is one of the few states where almost 100% implementation of CMVR is there. That's a big round of applause to him and his team. So a lot of government ideas, thoughts, processes can be there, but implementation and execution of those thoughts and processes is very critical, and that shows the able leadership that the present government the able leadership that we can see under him and the Chief Minister of the state. So, Gehlot Sahab, dealers are a very important pillar for any economy of the state, and as Garima highlighted, we definitely contribute in terms of road tax and GST. And one of the most important thing that we contribute is in employment. While we are a very, we provide a very unique business proposition where we don't actually displace people. Lot of businesses, lot of industries displace people. They kind of take up from one place and they put them up in another state wherever the factory or the unit is. But our manpower is almost 95% local. We employ people in the vicinity of the dealerships, and apart from that, we not only employ manpower, we also skill them. We've got a lot of example in all our dealerships across India where a person might have joined at a very junior level, maybe a peon or a driver or a washer boy, or maybe that person would be the GM sales or a CEO of that dealership. So that's the kind of skilling that happens in dealership. So a big opportunity for any person. It's an organized sector and a big opportunity for any person capable enough to create a growth story in dealerships. So since everybody is here, I would also like to brief the dealers about what FADA is doing. First, we have been talking about model dealer agreement. We have created a balanced dealer agreement where 2 OEMs have already signed the dealer agreement and executed it. And we are working with the rest of the OEMs. And another 3-4 months, we are definitely going to see a lot of breakthroughs happening in model dealer agreement. Second thing that we were working on was Auto Retail Protection Act. So now as a dealer body, now we have kind of renamed it as Retail Trade Protection Act, and we have tied up with various retail trade associations of India. This is led by CAIT CAT. Under them, there are almost 21 associations working across the length and breadth of India. We have tied with them. I think Mr. Praveen Khandelwal has got a ticket from Chandni Chowk. He's the president here in CAT. But all the mobile associations, FMCGs and auto, we are coming together and we'll be kind of we'll be in talks with the central government to form a retail trade law where we all dealers will also be protected. And FADA is the spearheader. We are leading that talks and formulation of strategy
to how to create that Retail Trade Protection Act. Since Mr. Gehlot is here, I already said almost all CMVR is mostly implemented here. But sir, we would also, as our Honorable Minister Nitin Gadkari also highlighted, that dealerships are an ideal place for setting up scrapping centers and automated testing facilities. So fitness testing facilities. So we are ideally placed. We are equipped. We'll do the requisite investment, and it's a kind of forward integration for the dealerships also. So please do give a first right opportunity for to the dealers to do this, to set up scrappage centers and fitness testing facility. Also, a lot of states have created a scrapping policy wherein the state government provides some rebate when COD. I was missing on that. So COD, the state government provides. Normally they are giving 25% rebate on the new vehicle road tax the customer buys. So that policy is still pending with the state government. So if that can come through, then definitely scrapping, and we can see newer, safer vehicles on Indian roads. So we will definitely be having a session on Vinkesh and Arindam would definitely take up scaling of manpower. That lot of things are happening on that front with FADA. That vertical is working very hard. We are striving to train every single manpower in our dealerships, right from sales, service, spare parts, including the dealer owners. So a lot of things happening on that front. So one thing that we can also do on skilling is in every state we are thinking of adopting ITIs. So if the state is willing, our Delhi chapter we can adopt ITIs where we can provide funds, we can provide equipments, and we can provide requisite training along with ASDC, where we are a partner, FADA is a partner, and we can continuously, auto industry is always striving for new manpower. It's a perennial requirement of manpower. So ITIs in any center that you deem fit that can be adopted or funded by FADA, and where skilling can be done, we are okay for it. We'll definitely like to collaborate with the state government on this. So though the MC talked about sapling that I have been giving, but the same policy has been rolled out for every dealer. I humbly request all dealers to be a part of it. Please do give a sapling along with every vehicle that you deliver. We finally are selling vehicles that definitely pollute. That should be our way of making our environment safer for our children in future. We adopted the Auto Dealers Day, and that went off very good. We have created road safety videos that you saw just before the start of the conclave. I would also like to highlight that almost 25 dealers went to North American Automobile Dealer Conclave, NADA conclave that was held in Las Vegas, and a lot of learnings that we could take place. I mean, it was almost 22,000 people were present in a single place, in a single location. Number of workshops happening there, including for dealers and dealership employees. So that was a big learning for FADA and inspiration for FADA. We do wish we'll work, whoever is involved in FADA will work together to make Indian dealer community to reach that heights. It's really, an eye-opener. So, sir, Kailashi, two things more pending on your CMVR funds, since I am humbly requesting you. 5-year trade renewal. The trade renewal is still happening on an annual basis. It's mandated by in the new CMVR. If that can be automated,
We just have to, if we have to just apply online and online it gets renewed, so that would be a seamless and a paperless process for the dealers. And the used car transfer, that still has some issues there. If we can transfer the used car faster, that is more revenue to the state government faster. Right now it is getting blocked with the customer. If the transfer starts happening faster, and this implementation of new policy that has come in where dealers are taking trade certificates for used car also, if that can be adopted, that can really aggravate the revenue to the state government also, and a very high level of comfort to the buyer and seller of the used car. So lot of things happening in auto industry. We are in a good time. In America we saw a lot of associations from various countries. Various countries are facing various kind of problems. Not everybody is so good. And when we told our India story, what is happening in India, where we are, what kind of growth Indian auto industry is achieving, they were amazed. I mean, we are cracking numbers here, and nobody is able to do so. And we should be thankful that post-COVID, we as dealers are a part of it. We are enjoying that growth. Maybe someone might be having less, someone might be having a better growth. But it's a good time for auto dealers, good time for the state government, and good time for the consumers. And we are also on the cusp of, I don't know whether it would be a EV revolution or a hydrogen revolution or a CNG or whatever. I think everybody will coexist in the future. But it's a good time for auto industry, and we should ride the wave. And finally, it is the customer who will decide what will run in the market. Thank you, everyone. And let's have a wonderful day together, good learnings, and good inspirations also. And we have our honorable chief guest, and he really, this is my second meeting, but I totally adore him for the candid replies and candid prompt actions that he takes. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, Mr. Singhania. That was insightful. Now, as we move forward, let's hear from our chief guest, Shri Kailash Gehlotji. Ladies and gentlemen, it is an honor to have with us today a distinguished individual who has dedicated his life to public service. Our chief guest, Mr. Kailash Gehlotji, Honorable Minister, Ministry of Transport, Women and Child Development, Information and Technology and Home, Government of NCT of Delhi. His deep-rooted connection to the community and long-standing commitment to human development, especially for the youth and underprivileged, make him a beacon of light. So without further ado, let us extend a warm welcome to Shri Kailash Gehlot. सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं पूरी फाड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और एक बार फिर दोबारा आपके बीच इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। सही पूछे तो अभी जो मनीष जी कह रहे थे कि जब आने से पहले उन्होंने कॉफ़ी पिलाया मुझे तो वहाँ कह रहे थे कि आपसे मिलके क्या शब्द यूज़ किया मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि किसी मंत्री से मिल रहे हैं। तो मैंने इनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में यही ख्याल आ रहा था कि आप लोगों से मिल के भी मुझे लगता नहीं हम किसी और से मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप परिवार के एक हिस्सा हैं, क्योंकि लगातार आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट probably 7 years as transport minister, और शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी जो पहचान है, हालांकि और भी पोर्टफोलियोज़ रहे हैं अभी भी, लेकिन शायद मेरी पहचान जो है वो एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही बन गई है। और सही पूछें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो आउट ऑफ ऑल द पोर्टफोलियोज़, बीच में तो काफ़ी अधिक पोर्टफोलियोज़ रहे, फाइनेंस भी रहा, बजट भी पेश किया था,
लेकिन आज भी अगर आप सही पूछें, अगर मुझे किसी भी फील्ड में अगर या कोई पोर्टफोलियो में विच आई नाउ एन्जॉय वर्किंग एंड टॉकिंग अबाउट इज़ एक्चुअली ट्रांसपोर्ट. आई थिंक इट्स बीन अ ब्लेसिंग कि ट्रांसपोर्ट जैसा लाइवली जो सेक्टर है और जो पोर्टफोलियो है वो मुझे मिला, और इतना सारा काम दिल्ली में हमने करके दिखाया. और मंच पर मनीष जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं फाडा के, गरिमा जी हैं, आई थिंक दिल्ली चैप्टर के सीईओ हैं आप, और विघ्नेश्वर जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, साय गिरधर जी सेक्रेटरी, और सहर्ष दमानी जी सीईओ हैं, और तमाम जो यहाँ पर मेरे ख्याल से दिल्ली के भी हैं और शायद हो सकता है दिल्ली के बाहर भी. गुड़गांव नोएडा को मैं दिल्ली में ही मान रहा हूँ, उसके आगे भी होंगे जितने यहाँ डीलर्स मौजूद हैं और मीडिया से बंधु हैं. मैं पूछ रहा था मनीष जी से कि क्योंकि गरिमा जी ने मेंशन किया कि दिल्ली जो व्यापार दिल्ली है, आपने कहा कि 7 साल के बाद, तो आई थिंक देयर इज समथिंग जो कि इस चैप्टर में कुछ है जो और में नहीं था. ईज ऑफ आई थिंक डूइंग बिजनेस का आपका मेन वो है. तो मैं बहुत ही सरल उसमें ये कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जितने हमने चीज़ें की, आई थिंक जितनी ज़्यादा फ्रीडम डीलर्स को और जो भी ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनको हमने इतनी शायद आज़ादी दी है, शायद पूरे देश में कहीं नहीं होगा. और आज़ादी इतनी हो गई है कि मिनिस्टर ऑफिस से अगर रिक्वेस्ट आता है कि यार इनको गाड़ी जल्दी दे दो, तो वो भी नहीं मिलती है. खैर ये तो फिर मैंने अपने ऑफिस में कहा यार ये भी इतनी भी ठीक नहीं है कि अगर मिनिस्टर ऑफिस से, क्योंकि मैं अपने लिए तो गाड़ी नहीं ले रहा, वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव. अब हमारे पास रिक्वेस्ट कैसे आती हैं कि जी शादी इस दिन फिक्स हो गई है और इस दिन, अब शादी की डेट तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन गाड़ी उसी दिन चाहिए. अब हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती है. तो आई कीप ट्रबलिंग माई OSD एंड माई सेक्रेटरी कि भाई वो उनकी जेन्युइन रिक्वेस्ट है. So this is the level of freedom which we have, I have tried to explain in very short, the level of freedom which we have given in Delhi and we actually mean it. और मैं आते हुए ये भी देख रहा था कि अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो मेरे ख्याल से इससे आगे शायद एक या दो चीज़ें बची हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आना पड़ता है. एक तो है गाड़ी की फिटनेस. अब गाड़ी की फिटनेस पता नहीं आगे हो सकता है कुछ रास्ता निकल जाए. जैसे अभी जब वेट कर रहे थे तो चर्चा हो रही थी मनीष जी से कि घर घर जाके भी गाड़ी की सर्विस करने का ऑप्शन है. सो इसी प्रकार से अब आगे आने वाले में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए कि गाड़ी की फिटनेस भी घर जाके कर सकें. सो अदरवाइज द अदर थिंग इज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने जाते हैं. सो ये दो चीज़ छोड़ के आई डोंट थिंक यू हैव टू विजिट एनी ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एनी ऑफिसर. सो और इसके जो नंबर्स में अभी आते हुए चेक कर रहा था, अगर हम फेसलेस सर्विसेज की बात करें तो आई थिंक ये हमने लॉन्च किया 19 फरवरी 2021 को. एंड 45 सर्विसेज जो हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आर फेसलेस. सो इट मीन टोटल 47 सर्विसेज, वो दो केवल छोड़ के अदरवाइज ऑल अदर सर्विसेज आर ऑन फेसलेस मोड. इट मीन्स यू डोंट हैव टू विजिट और मीट एनी ऑफ आवर ऑफिसर. और आप जहाँ भी हैं, दिल्ली में हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं न्यूयॉर्क में हैं, बैठे आप वहाँ से ही आप काम कर सकते हैं. और इन 45 सर्विसेज में फेसलेस के थ्रू वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस्ड 53 lakh applications in a span of maybe 2-3 years. So that's a huge number. एक एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट और अधिक होती हैं. एक एप्लीकेशन में दे कैन बी 3 multiple requests. So it means lakhs of people
have benefited from this initiative and they have not visited any of our offices. उनका टाइम आप सोचिए कितने मैन आवर्स अगर आप कैलकुलेट करें तो इट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक फॉर. और वाइल स्पीकिंग आई ऑल्सो रिकॉल इसके पीछे पूरा जो विजन जो ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी का था, तो उनका विजन बड़ा सिंपल था कि भाई अगर आप एक आम आदमी की तरह, कॉमन मैन की तरह अगर वो काम करना चाहते हैं तो आप अपने लिए क्या सोचेंगे, वही चीज़ को सोचते हुए कि भाई हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम टेक्नोलॉजी. एंड आई थिंक वी वर पाइनियर्स इन दिस फील्ड. जो हम फेसलेस एप्लीकेशंस की बात करते हैं, दिल्ली हैज़ बीन द पाइनियर. वी वर द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री टू लॉन्च द फेसलेस सर्विसेज, इंक्लूडिंग जो हमारा जो लर्निंग लाइसेंस का है. लर्निंग के लिए भी आपको हमारे किसी ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है. आप जहाँ भी हैं, वेदर इन दिल्ली और अब्रॉड, सो थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर टेक्नोलॉजी आपकी जो फ़ोटो है वो कंप्यूटर कैप्चर करता है और आधार कार्ड्स में जो फ़ोटो है उससे मैच करता है. एंड आई थिंक सक्सेस रेट इज़ ऑलमोस्ट 99%. 1% में कहीं अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं फेस में तो शायद उसमें कहीं दिक्कत आती है, अदरवाइज़ अभी तक ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं आए हैं. सेल्फ रजिस्ट्रेशन, आई एम श्योर आप सभी को पता होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन. और जो आप गाड़ी की आरसी प्रिंट करके अपने शोरूम से देते हैं, आई डोंट नो आप डीलर्स कितने हैं यहाँ पर? अच्छा, सभी डीलर हैं. तो आप लोग आई होप दे रहे हैं अपने अपने. अच्छा जी जी. अच्छा, मैंने सोचा और जो उन्होंने हानि किया वो नहीं दे रहे हैं. सभी दे रहे हैं. सो ये हमने लॉन्च किया था आई थिंक सम टाइम इन अगेन इन 21 एंड आई वॉज चेकिंग विद गरिमा जी. तो वो मतलब मैं नहीं कह रहा, वो कह रही हैं कि और किसी स्टेट में इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ है. क्योंकि यहाँ पर हालांकि हमारे ऑफिसर भी बैठे हैं, क्योंकि अपना जो पावर है ना, अपनी जो है वो कोई छोड़ना नहीं चाहता शायद. ये फैक्ट है. सो प्रॉब्ली आई थिंक नो अदर स्टेट हैज़ गिवन दैट पावर टू दी डीलर्स कि भी आप अपना जो भी कस्टमर है वो उसको वहीं से प्रिंट करके आरसी आप दे दीजिए. एंड आई थिंक टोटल आरसीज प्रिंटेड टिल डेट फ्रॉम द डीलर्स एंड is 10,29,821. So again that's a quite a big number. बल्कि बाकी तो इलेक्ट्रिक बसेस आप देख ही रहे हैं. आई थिंक वी आर नाउ प्रॉब्ली इफ़ यू लीव दी चाइना की अगर शहर छोड़ दें आप तो प्रॉब्ली सेकंड इन द वर्ल्ड. पूरे देश में तो हम नंबर 1 पे हैं ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें. इनफैक्ट आई थिंक आप डेटा दे रहे थे शायद 26% ऑफ द रजिस्ट्रेशंस इन दी, अगर हम कार सेगमेंट की बात करें तो वो ईवीज़ हैं. अगर टोटल रजिस्ट्रेशन अगर आप कंपेयर करें तो आई थिंक प्रॉब्ली 12-13% के आसपास हमारा ईवी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. आई थिंक दिसंबर 22 में हमने शायद पीक किया था 16 या 18%. सो अगेन द नंबर ऑफ ईवी परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री. और कुछ चीज़ें जो मनीष जी मेंशन, अच्छा उससे पहले मैं भूल ना जाऊँ, वन सपोर्ट आई रिक्वायर फ्रॉम द डीलर्स एंड. आई मेंशन दिस टू बिकॉज अदरवाइज क्या है कि लास्ट में तो फिर हम उसको एज अ स्टेट हमें जो करना है वो तो हम कर ही देंगे. दिस इज़ पार्ट ऑफ फेसलेस ओनली. सो हाइपोथिकेशन जब है एडिशन और डिलीशन, सो आई स्टिल रिमेंबर आई हैड मीटिंग विद ऑल द बैंक्स, ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और हमने काफ़ी समय दिया. अभी भी काफ़ी जो डीलर्स हैं वो हाइपोथिकेशन मैन्युअली कर रहे हैं. उसका एक बार आप चेक कर लीजिएगा. इनफैक्ट जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी NBFCs हैं उनको हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि एक बार अगर लोन ख़त्म हो गया है देन जो हाइपोथिकेशन है ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाना चाहिए. बिकॉज जब लोन ख़त्म हो गया, सो आई थिंक कपल ऑफ बैंक्स उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है. कुछ शायद जो छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो
नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को. जो एडिशन है आई थिंक वो भी मैनुअली है. दे आर टेलिंग द कस्टमर टू विजिट द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिस उसको ऐड करने के लिए. मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैव बीन गिवन. उसके बाद वी विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू ब्लॉक द रजिस्ट्रेशन. सो वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो डीलर्स हैं फिर उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो ब्लॉक करना पड़ेगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट फाडा एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो टू हैव अ वर्ड विद ऑल द डीलर्स. और क्योंकि वो इवेंचुअली जो फैसिलिटी है वो कस्टमर के लिए ही है. सेकंड आपने मेंशन किया स्क्रैपिंग के बारे में. सो आई थिंक स्क्रैपिंग का दिल्ली में स्क्रैपिंग की कोई यूनिट इस्टेब्लिश करना अलाउड नहीं है. वी हैव अडॉप्टेड द सेम पॉलिसी, द सेम नॉर्म्स which have been finalized by the central government. और उसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई और उसमें मदद चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. आपने COD का बात किया. सो वो स्क्रैपिंग का आई थिंक विद इन दिस वीक विल फाइनलाइज. और जो भी इंसेंटिव्स COD पे मिलते हैं वो दिल्ली में भी फिर सबको मिलेंगे. ट्रेड सर्टिफिकेट का हम एग्जामिन कर लेंगे अगर रूल्स अलाउ करते हैं उस प्रकार से. सो वी कैन 1 साल की जगह उसके फिर वैलिडिटी आप कह रहे हैं 5 साल, तो अगर बीच में कहीं भी सेटल हो सकता है. स्किलिंग की आपने बात की तो आई थिंक दैट इज़ अनदर ग्रेट. दिल्ली में बहुत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिपेयर शॉप्स चल रही हैं, आई थिंक अगर हम वहाँ स्किलिंग का अगर आप कुछ शुरू करें तो आई एम श्योर वहाँ जितनी भी मैन पावर है वो ज़रूर चाहिए. बिकॉज उसके बाद अगर आप उनको सर्टिफिकेट भी दें, उनको रिकग्नाइज भी करें, सो उनकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और उनका वैल्यू एडिशन ज़रूर होगा. मैं गरिमा जी को कह रहा था कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम माई विधानसभा. मेरी विधानसभा नजफगढ़ है, तो वहाँ भी काफ़ी काफ़ी सारे ऐसी बड़ी बड़ी जो गाड़ियों से लेके छोटी गाड़ियाँ तक जो हैं वो रिपेयर होती हैं. तो वहाँ पर अगर आप करना चाहेंगे तो, या दिल्ली में अगर आप कहीं भी करना चाहेंगे तो एज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, तो आई विल इंश्योर कि आपको पूरा सपोर्ट मिले. बाकी आप सभी को एक बार फिर दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्रोग्राम की. और आई विश एंड प्रे कि आप इसी प्रकार बहुत बढ़िया काम करते रहें. आई एम फुल्ली कॉन्शियस कि जो डीलर्स हैं और जो भी उस पूरी सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं वो इस पूरी इकॉनमी का अहम हिस्सा हैं. और ये चीज़ हम जब ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा मांगते हैं, जब बजट फाइनलाइज हो रहा होता है, तो ये चीज़ मैंने अलग अलग फोरम्स पे ये हमेशा उठाया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए बजट हम सिर्फ लेते नहीं हैं बल्कि सरकार को हम वापस भी देते हैं. आई थिंक अराउंड 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए साल का रोड टैक्स और दूसरे जो टैक्सेस हैं उसके रूप में हम सरकार को वापस भी करते हैं. एंड दैट्स अ साइजेबल कंट्रीब्यूशन एंड वी रिकग्नाइज दैट. एंड आई होप the dealer community continues to do good work and continues to serve Delhiites in a very professional, very organized, very systematic and very seamless manner. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपकी बातों से मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा, और अगर मार्गदर्शन मिला है तो इसी बात पे दोबारा से श्री कैलाश गहलोत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. So a big thank you to Shri Kailash Gehlot ji for addressing us, but now it's time that we express our gratitude as I invite Mr. Avachal Dhingra to present the vote of thanks. Mr. Avachal Dhingra is the director at Sincere Marketing Services Private Limited, an authorized dealer of Volvo Eicher commercial vehicles. Over to you, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of FADA and all the automobile dealers in attendance today, it is my pleasure and responsibility to offer the most sincere vote of thanks to our chief guest, Honorable Cabinet Minister, Shri Kailash Gehlot ji. Thank you, sir, for sparing your valuable time and gracing this occasion today.
Sir, you have truly inspired us with your address, and we continue to look forward to your guidance and further inspiration. The faceless services undertaken by the Transport Department under your leadership are greatly appreciated by all of us. The Delhi dealerships today proudly hold the flag for being one of the first beneficiaries of all the amendments in the Central Motor Vehicles Act, thanks to your leadership. Also, the push for electric vehicles in Delhi is the reason why we are all breathing cleaner air today. Thank you, Manish ji, for relentlessly pursuing the model dealer agreement and the retail trade law. Thank you, Garima ji, for highlighting the contribution being made by the Delhi dealership fraternity towards the development of the city. Once again, thank you all very much. Thank you so much, Mr. Dhingra. To show our appreciation now, I would request Mr. Manish Raj Singhania ji to felicitate Shri Kailash Gehlot ji. Please, let's have a huge round of applause. This is a significant moment for all of us.